Hello, Sat Sri Akal, Namaste, Adab ji. This is Harpal Singh again, back with a new video, and this time again it is for US visa information. जी हाँ, ये वाली वीडियो भी US वीज़ाज़ के इंफॉर्मेशन के बारे में है जी. एक्चुअली 30th नवंबर को रिसेंटली Q&A सेशन हुआ था जी विद डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी वीज़ा सर्विसेज मिस जूली स्टफ्ट. जी हाँ, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पे आंसर किए थे विच इज़ स्पेशली बीच में कहूँ तो इंडिया के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी. शी टॉक्ड अबाउट इंडिया बैकलॉग, K1 वीज़ा प्रोसेसिंग, इमिग्रेंट वीज़ा, वेटिंग टाइम नॉर्मल कब होगा, एवरेज टाइम, वीज़ा ऑफिसर्स के बारे में. सो टुडे विल टॉक अबाउट इट. उनकी इंटरव्यू इंग्लिश में है जी, बट आई एलैबोरेट इन हिंदी फॉर माई फैंस हु वांट टू नो इन हिंदी. ठीक है जी. So without wasting time, we'll start the video. हाँ जी, so as I told you, there was a Q&A session. MS जूली स्टफ्ट जो कि डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वीज़ा सर्विसेज की, उन्होंने स्पेशली विजिटर वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ पे सेशन लिया था. ठीक है जी. और दे शेयर इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंडिया बैकलॉग. जी हाँ, उन्होंने जी इंडिया के बैकलॉग के बारे में बोला कि इंडिया का बैकलॉग जल्दी से जल्दी हम कम कर रहे हैं. ठीक है जी. दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन इट एंड इम्प्रूव भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया उनकी प्रायोरिटी पे है. इस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, H वीज़ा हो, L वीज़ा हो, B वीज़ा हो, B1 B2 का हो. ठीक है जी. और ये 2023 तक ये नॉर्मल कर दिया जाएगा. दैट्स व्हाट शी प्रॉमिस्ड. लेट्स सी द क्लिपिंग. Another question that comes up a lot, it's specific to India. When will the large backlog in India go away? Mm-hmm. India is a huge priority for the State Department, the Bureau of Consular Affairs, and me and our team in the visa office. It does fall into that handful of countries that I mentioned earlier, where we have very high demand in a wide number of range of visa categories. So I can tell you that we are absolutely focused on helping all of our posts around the world, but especially India, to get the resources it needs and the help it needs to bring those wait times down as quickly as possible. Without going into specifics, I can tell you that we will see and you will see significant progress in 2023. That's excellent to hear. हाँ जी. So as you saw what she said, it's a good news. Hope for the best. देखते हैं क्या होता है. आगे बात करते हैं जी. She talked about K1 वीज़ा प्रोसेसिंग. ठीक है जी. K1 वीज़ा की क्वेश्चन किए गए कि वो कब प्रोसेस होगा, फास्ट हो रहा है, कैसे है. सो शी प्रॉमिस दैट K1 वीज़ा प्रोसेसिंग जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है, बट दे आर वर्किंग फास्टर देन अर्लियर टाइम्स. जो टाइमिंग पैंडमिक से पहले करते थे उससे ज़्यादा कम टाइम में वीज़ा प्रोसेस किए जा रहे हैं. ठीक है जी. सो लेट्स सी व्हाट शी सेड इन द लाइव वीडियो. There's one question here about the K1 visas. How long does it take to process a K1 visa? Well, that depends on the location of processing, but again, we consider a K visa to be an immigrant visa. And therefore, I don't want to get too far into that because we're talking about visitor visas here. But certainly, K visas are a priority for us, and they move very quickly in most parts of the world. Right. हाँ जी. So you saw about K1. अब बात करते हैं. She also talked about administrative processing. कि एडमिन प्रोसेसिंग जो होती है उसमें कितना टाइम लगता है, वो कब कम होगा. तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो टाइम जो है केस टू केस डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट पहले से कम टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग जो है फिनिश की जा रही है. सो इफ़ यू हैव मिनिमल थिंग्स टू गेट इट क्लियर्ड, आपका केस स्ट्रॉन्ग है, कुछ चीज़ें वेरीफाई करने वाली हैं बैक एंड पे, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दी जाएगी. ठीक है जी. सो लेट्स सी द वीडियो व्हाट शी सेड. How long does administrative processing take? Again, that's a very individual case-by-case basis type of process, but
We have as many processes through the visa operations in the last year. We have innovated a lot the administrative processing piece. So we do believe that there'll be significant reductions in wait time for any back-end processing associated with a visa. Excellent. Yeah. As you've been saying a couple of times here, it's a case-by-case situation, and seems like a lot of cases are different. So it really depends on the circumstances of your individual case. That's right. Okay, so you saw what she said about administrative processing. Now we'll talk about immigrant visa. कि इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में उन्होंने क्या बोला है. एक्चुअली शेयर उन्होंने क्लियर किया है कि यूएस कांग्रेस पार्टी जो है वो ऑलरेडी मैंडेट पास कर चुकी है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट वीज़ाज हैं वो ASAP किए जाएंगे. ठीक है जी. दे आर वर्किंग ऑन इट ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट शी सेड. Perhaps you can shed some light on, are there any planned innovations for the immigrant visa process? Absolutely. We have a mandate from the U.S. Congress to make sure that we're moving immigrant visa cases as quickly as possible. The National Visa Center is part of our office, and we work with the National Visa Center and Post to make that process for immigrant visas go as quickly as possible. We also work with DHS, USCIS to reduce processing time. I think the question earlier about paper versus electronic visa or petition process had to do with the legacy paper process versus the newer USCIS electronic process. But it's really been exciting for me and others to see the innovations that both agencies are making to really make this process better. Yeah, definitely. हाँ जी, तो ये था जी इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन. अब दूसरी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने उनसे पूछा था. वो क्वेश्चन ये था कि वीज़ा वेटिंग टाइम नॉर्मल कब होगी, जैसे पैंडमिक से पहले थी. सो इसके बारे में उन्होंने बोला कि भैया वास्ट मेजॉरिटी जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हद तक वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम जो है वो नॉर्मल हो चुकी है. लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं, फ्यू कंट्रीज़ जिसका बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है वीज़े की. ठीक है, जिसमें इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना आते हैं. इनमें थोड़ा टाइमिंग सभी कवर अप कर रहे हैं क्योंकि पैंडमिक के टाइम में भी फाइलें पाइल अप होती रही हैं और काम हुआ नहीं तो बैकलॉग ज़्यादा बढ़ गया. सो लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट दैट. When will visa wait times go back to pre-pandemic times? Mm-hmm. So in the vast majority of places in the world, they already are. Embassies are operating in a very similar nature, and sometimes with even lower wait times than they were operating pre-pandemic. But there are a handful of locations where we have very high demand for visas. It was building up during the pandemic when we were required to be closed. And it's just going to take us a few months to get through those backlogs, even if as we're throwing all of the human capacity we can and human resources at the problem, it's just going to take time because there's just a huge number of people waiting to have their visas adjudicated in those countries. So when you see news about long wait times, you're seeing a very limited picture. And there are many, many places where things are absolutely back to normal. In fact, the vast majority of posts. Okay, so एक लास्ट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जी आपसे. She shared some information about वीज़ा ऑफिसर्स. जी हम जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि US एम्बेसी ने वीज़ा ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं. सो टुडे आज उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हाँ जी हमने वर्ल्ड वाइड वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं हायर किए हैं ओवरसीज़ और मिड 2023 में फुल्ली ऑपरेशनल होंगी विद एक्स्ट्रा स्टाफ सारी एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड. सो लेट्स सी व्हाट शी सेज अबाउट इट. About hiring more visa officers, adjudicators. Could you speak just generally a little bit about our efforts with that? Sure. We've hired a lot of additional adjudicators for visas in the last year, and essentially we've doubled the number of people going out to our overseas posts. And in the few months or by the middle of next year,
we will be fully staffed overseas. So we will be at the same or higher numbers of officers who are doing visas as we were during the pandemic, before the pandemic, excuse me. Right. Excellent. Hanji, friends, so this is what I have for you. Now you have official confirmation from वीज़ा सर्विस सेक्रेटरी जूली स्टफ. उन्होंने क्लियरली बताया क्या क्या वो कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ हॉक्स कि जो हम आपको वीडियो बनाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट माय मोटो इज़ टू शेयर विद यू कि जो कुछ शेयर किया जाता है दैट इज़ ऑन ऑफिशियल कंफर्मेशन. I hope you're gonna like this video. I'll definitely come up with a new video once I have another information. Stay tuned with the channel. You guys take care. Have a nice day.